फ्रेंड्स, माय रिटायर्ड लाइफ फाउंडेशन की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है इस महीने की सबकी सुनो प्रोग्राम के लिए। और जैसे कि आपको मालूम है, सबकी सुनो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम वेयर यू कम टू नो, लिसन टू द व्यूज ऑफ all the members on the various issues, topics, subjects, their experiences and so on and so forth. तो आज के पहले स्पीकर हमारे एन के अग्रवाल साहब, मैं उनको आमंत्रण करता हूं कि आए। Thank you, Dr. Samruta ji, and all my friends. Good evening. I'm going to share today some details about the life history of the great mathematician Prashant Chandra Mahalanobis. He is also known as the father of modern statistics in India. He was born on June 29th, 1893 in Calcutta. His father was Prabodh Chandra. He was born in an academically oriented family. Mahalanobis pursued his early education in Calcutta. He graduated with honors in physics from Presidency College, Calcutta in 1912, where his teachers included the famous J.C. Bose and P.C. Roy. After graduating, he moved to England to study physics and mathematics at the University of Cambridge. Just before Mahalanobis left the university in 1915, he was introduced to statistics by one of his tutors. On return to India, he accepted a temporary position teaching physics at Presidency College, and he became a professor of physics there in 1922. He married Nirmal Kumari Rani on 27th of February 1923. On December 17th, 1931, he established the Indian Statistical Institute in Calcutta. Mahalanobis devised a measure of comparison between two data sets that is now known as the Mahalanobis distance. He also devised a statistical method called fractal graphical analysis, which could be used to compare the socio-economic conditions of different groups of people. He applied statistics to economic planning for flood control. His interest in statistics had evolved into a serious academic pursuit, and he applied statistical methods to problems in anthropology, meteorology, and biology. In 1950, he formed the Indian Statistical Institute with a statistical laboratory setup. He is also known for being a member of the first Planning Commission of Free India. He was instrumental in formulating India's strategy for industrialization in the first five-year plan, second five-year plan, 1956 to 61. The second five-year plan encouraged the development of heavy industry in India and relied on Mahalanobis' mathematical description of the Indian economy, which later became known as the Mahalanobis model. Mahalanobis held several national and international portfolios. He served as the chairman of the United Nations Subcommission on Sampling from 1947 to 1951 and was appointed the honorary statistical advisor to Government of India in 1949. He was awarded the OBE, Most Excellent Order of the British Empire, for his excellence in sciences, and fellowships of several national and international societies like FNA, Indian National Academy, FASC, Indian Academy of Sciences, FRS, Royal Society, etc. For his pioneering work, he was awarded the Padma Vibhushan by the Indian government in 1968. Mahalanobis died on June 28, 1972 at Calcutta at the age of 79. On the occasion of his 125th birth anniversary on 29th June 2018, Indian Vice President M. Venkaiah Naidu released a commemorative coin at a program at ISI Kolkata. National Statistics Day is celebrated every year on June 29th to mark the birth anniversary of Prashant Chandra Mahalanobis. The first National Statistics Day was observed in 2007. Mahalanobis has been truly considered as the father of
modern statistics in India for his excellent contribution. He is indeed one of the great Indian mathematicians. Thank you very much. Jai Hind. Thanks a lot, Agarwal Sahab, to bring out the detailed memory line and the history line of the Dr. P.C. Mahalanobis, one of the greatest statisticians, mathematicians, even economists of the country. Mahalanobis model, we studied in fundamentals of economics, we studied the Mahalanobis model. That is the beginning of the 5-year plan in India. That is the start of the 5-year planning in India. It was a great narrative. Thank you very much, Agarwal Sahab. Thanks. Thank you, sir. Thank you. May I call upon the second speaker, Meena Saxena, madam? Hello, I am audible. Hello. Yeah, you're audible, Hello. madam. Please go ahead. Please go ahead. हाँ, नमस्कार। मैं सबको दिल्ली से नमस्कार कर रही हूँ। मैं आजकल दिल्ली में हूँ, तो मैं सबको नमस्कार कर रही हूँ और उम्मीद है आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों को स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बताऊंगी कि उनके बारे में तो कितना भी बोला जाए उतना कम है, लेकिन मैं उनकी थोड़ी सी टीचिंग्स के बारे में कुछ बात करूंगी। मैं 12 जनवरी 1863 को पैदा हुए स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश के महान विचारक थे। उनके आवाज आ रही है आप लोगों को? आप आवाज आ रही है, आप दिख नहीं रही है मैडम। कैसे कैसे करूं? कैमरा घुमाइए। नहीं हो रहा मेरे से। मीना जी प्लीज गो अहेड। सेल्फी मोड में रखिए। Continue, yeah, that's okay. चलिए मैडम, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। आज ठीक है, ओके। तो स्वामी विवेकानंद जी के जो दार्शनिक विचार थे, वो कथन जो उनके आज भी सभी युवाओं के लिए जितने उनके टाइम में इम्पोर्टेंट थे, आज भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। वो देश के सभी युवाओं को बेधड़क आगे बढ़ने के लिए, बढ़ते रहने की प्रेरणा देते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी और 1893 में अमेरिका में शिकागो में हुए विश्व धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने भारत और हिंदुत्व के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया और हिंदुत्व के प्रति उन्होंने ऐसा व्याख्यान दिया कि लोगों का रुझान हिंदू धर्म के प्रति बढ़ने लगा। तो मैं आज उनकी कुछ विचारधाराएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं उनकी जो शिक्षा है, शिक्षा के विषय में बात करूंगी। उनका कहना था हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके, जो कि आज के जमाने में भी कितना ही जरूरी है कि हमें ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि जितने युवा लोग अपने पैरों पे खड़े हो सके। फिर उनका कहना था जैसा तुम सोचोगे वैसे ही बन जाओगे, खुद को निर्बल कभी मत मानो, हमेशा सबल मानो, कमजोर मानोगे तो कमजोर ही बने रहोगे, हमेशा अपने को स्ट्रांग सबल मानो। फिर वो कहते हैं जो किस्मत पर भरोसा करते हैं वो कायर होते हैं। जो सिर्फ किस्मत पर भरोसा करके बैठे रहते हैं कि जो किस्मत में होगा वो होगा, जो किस्मत पे भरोसा करके बैठे रहते हैं वो कायर होते हैं और जो खुद मेहनत करते हैं वो मजबूत होते हैं, क्योंकि मेहनत से तो किस्मत भी बदली जा सकती है। क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले हमारे शरीर में है, पहले हमारी हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, सारे यूनिवर्स की जो पावर्स है वो पहले हमारी हैं। अगर हम आंखों पे हाथ रख करके बैठे रह जाए कि अरे कुछ ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो ये हमारी गलती है, किसी और की नहीं। अगली टीचिंग है उनकी, यह ज्यादा अच्छा है हमारे लिए कि शरीर को घिस घिस के कुछ करते हुए मर जाएं, बजाय इसके कि तमोगुण में पड़े पड़े हजारों साल जिए। माने कि हमें मेहनत करते करते ही जिंदगी का अंत कर दे, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, बजाय हाथ पे हाथ धरे हुए हजारों साल जी रहे हैं, वो ठीक नहीं। फिर उनका कहना है उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपनी मंजिल को ना पालो। कितनी अच्छी बात कही है,
हर युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक बात है। विनम्र बनो, साहसी बनो, शक्तिशाली बनो। फिर उनका कहना है जीवन में जोखिम उठाओ, माने रिस्क लो, जीवन में रिस्क लो। अगर तुम जीत जाओगे तो नेतृत्व करोगे, अगर तुम पराजित हो जाओगे तब भी मार्गदर्शक बनोगे। यानी कि हमें जीवन में रिस्क लेना चाहिए। अगर हम जीत जाते हैं तो लीडरशिप क्वालिटी हम में डेवलप होगी, और अगर नहीं भी जीतते हैं तो हम दूसरों को मार्ग दिखाने के लायक बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट उनका है किसी की निंदा ना करें। अगर आप कर सकते हो तो मदद करो, और अगर नहीं कर सकते हो तो हाथ जोड़ के पीछे हट जाओ, किसी की राह का रोड़ा मत बनो। और अंत में उनके लिए कहती हूं कि मैं, जितना हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं उतना हमारा मन पवित्र होता है, और पवित्र मन में ईश्वर का वास होता है। पवित्र मन में ईश्वर का वास होता है। ऐसे ही सुंदर अनेकों विचार स्वामी जी ने हमें दिए, जिन्हें हम अपने जीवन में अमल में ला करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं बातों के साथ, विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। धन्यवाद। मेरा मैडम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने स्वामी जी के जो काफी विचार थे उसमें से चंद विचारों को आपने इतने बढ़िया व्याख्यान किया जो आज के दिन में भी उतने ही रिलेवेंट हैं जो कि उनके जमाने में था। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपने जो बोला। और वो जो पर्टिकुलर जो वाक्य आपने बोला जो भी युवक के लिए था, उठो जागो और तब तक मत सो जब तक कि अपना मंजिल आप नहीं पा लेते हो, वो आज तक भी उतना ही वैलिड है। हम लोग भी बोलते रहते हैं डिफरेंट फॉर्म में। बहुत अच्छा बोला मैडम आपने। Thank you very much for bringing back the memory of Swamiji. Thanks a lot. May I call the next speaker, Padmakini madam? Thank you, Dr. Sengupta ji. Thank you so much for giving me the opportunity. I'm going to speak about aging and plastic surgeries. Beauty surgeries are in nowadays. We want to look as beautiful as ever always. Want to look very presentable. Many of us has this desire. It's okay to have this desire, quite normal to have this desire. But when it becomes a priority by any means, that is a failure actually, and very harmful. Here I am going to speak about the widespread beauty treatments like Botox treatment, plastic surgeries, belly augmentation, butt augmentation, etc. Butt augmentation surgery was done to 21,000 people in the US in 2014. And these numbers of these procedures increased by 86% in the recent years, researchers say, in comparison. The most widespread beauty surgeries in China are those that are directed to reduce weight and add attractiveness. Worldwide aging populations spend thousands to fit the social standards of beauty. The ethical issue is that in an attempt to change one's body and make it similar to those that are presented in the media and cine stars, people lose their identities and opinions. The social norms claim that only normal weight looks pretty. Normal weight is your actual weight minus 100 is the normal weight actually. So normal weight is the looks pretty, and that only slim body is eye-catching. However, the idea of following the social expectations is based on how others perceive the person, which while his or her self perception is disregarded. The majority of the existing beauty standards imply looking young and having elastic skin and long lashes, which creates anti-aging prejudice. The modern aspiration by plastic surgery for older adults creates the ethical challenge of inconsistency between a person's appearance and soul. Those patients who want to pursue their desires and imitate the bodies of models and celebrities are doomed to failure. Researchers call plastic surgeries the surgery of the soul, meaning that their effects are not only physical but also spiritual. At the same time, some patients are aware of the risks and seem to adequately pursue plastic changes.
means everywhere, every nook and corner, we can see dermatologists forgetting their practice, doing beauty business, and advertising that they will do Botox treatment, giving some injections for facelift, for eye lift and eyebrows lift, and augmentation of the body. All these things are going on. But also along with that, they will nicely say that it gives 6 months of paralysis, mild paralysis, they say. How people will agree for this? It is, I really get scared when when they say that 6 months paralysis is because of that Botox treatment is going to happen. But still, people are very keen on getting all these treatments. And, also, coloring the hair and all in different colors, which will block the pores of the, skin. And also, blood clots will happen, also baldness will happen. All these things, all artificial beauty, chemicals, use of chemicals, it is to be reduced. That's what I'm going to say. And uh, you know uh, only physical, their effects are not only physical but also spiritual at the same time. Some patients are aware of risks and seem to adequately pursue plastic surgery. In this case, it is possible to speak about the psychological and physical well-being of an older adult who understands the value and expected outcome of plastic surgeries. Social change is needed to recognize the fact that aging females and males are beautiful as they are without surgeries that destroy their identity. Namely, it is important to encourage older adults to focus on healthy lifestyles, being more active and remaining happy. Like what we do in MRL, we are having an active aging here. Aging people should feel powerful since they have valuable experience, while their beauty is unique as it comes from inside out. Our age group is the one who grew up with very good and non-adulterated food. I mean organic food actually, compared to present days. We are the ones who have health, good skin, and natural beauty by nature compared to younger generation. So let's have a healthy, presentable look always with a smile and enjoy life with active aging without going for artificial treatments. धन्यवाद. Thank you so much. धन्यवाद पद्मावती मैडम, आपने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट लेकिन बहुत ही रिलेवेंट सब्जेक्ट है आज के ऊपर में, आपने उस पर बात किया, आपने अपनी व्यू रखी, एक पर्टिकुलर व्यू, that is one sided view. There can be another side of the view also, but that's an excellent view that you look at your internal beauty, you look as you are, and keeps yourself physically and mentally agile rather than looking at the external skin and beauty. Yes. Thank you, Padmakini madam. Yes, thank you so much. It's a very, very good topic to talk on. Nice topic. Thank you. May I request the next speaker, Dr. B.D. Prajapati ji? आप शायद म्यूट हैं, डॉक्टर भगवान दास प्रजापति जी. You are there, but you are muted. You are muted, please. You are still muted. Yeah. I think what we'll do is, that's fine. Yeah, thank you very much, sir, for giving opportunity. I'm new entrant for this. This is the first time कुछ बोलने का मौका मिला मुझे. Dr. Bhagwan Das Prajapati. I'm just a brief introduction. I'm a retired general manager from ONGC. I've not known about the format about all this, but just a few minutes I will explain about what I have perceived about MRL, and then one small topic I will cover up within time. So MRL, what I perceive as institution, it's a big university, and everybody who I am finding the face
and personality over here is an institution within themselves. Everybody, because they are rich in experience, rich in knowledge, rich in every type of techno managerial competence. So it is my perception, sir. And Sen Gupta Sahab, I am very much thankful that you are moderating all these things in a very brisk manner, and you are giving a good knowledge about all these things. So this retired life unit is not just retired. It's a nectar of all these things. This is my perspective, sir. And I'm ardent watching of nature's creations. Only two things I'm always thinking: what is the reason we cannot know about that? And putting the question also here, so you can also give a thought on that. And Professor Sen Gupta Sahab may enlighten in future time, in some time later. So one thing is that when birds fly in the flocks, in the groups, why they can't collide each other? Why they can't collide each other? Huge bird flocks are moving, flying each other. They can't collide each other. What is the training? How they are going? What is the GPRS for them? What is the GPS system for them? Nobody knows. It's a great question. Another one, sir, we have all thumb impression. Everybody has got a thumb impression and unique thumb impression all over the world. Where is the index? Where is the catalog? Who made it? Who has decided? No two persons are two, even two babies, twin babies, they don't have a similar thumb impression. There is some difference. Who decides it? So this is the question in my mind. So that I have put it over here. So I am very much fond of listening today, first day. So next time, sir, I will prepare a good topic, because I was also a faculty for communication skills also. So I can also deliberate many things and learn first, then give you something about that. This is a brief about that, sir. Thank you very much, sir, for giving me opportunity. Thank you, sir. Thank you very much. Both the questions which you talked about are really intriguing for all of us. Yeah. Why the birds as a group, they don't collide when they fly, and also why two human beings indexes are thumb impressions are not the same. Such a big universe where you have got an 8 billion population, and despite that they do not match each other. That's a question, and that question remains unanswered, and let it remain unanswered, because there are, if all questions are answered, then we will possibly become the superpower. Thank you very much, Dr. Pradhan. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much for. May I request the next speaker, Bharat Bhushan ji, to please come forward. हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या सर? आ रही है प्लीज। तो MRL के सभी साथियों को अभिनंदन, वंदन और सादर नमन। साथियों, मैं बहुत समय से सबकी सुनो प्रोग्राम देख रहा हूं और अपने सभी साथियों के विचार भी सुन रहा हूं, और मैंने ये महसूस किया कि हमारे ग्रुप में एक से एक प्रतिभावान और बुद्धिमान लोग मौजूद हैं। और डॉक्टर सेन गुप्ता सर का मैं इसलिए आभारी हूं कि वो ऐसी प्रतिभाओं को खोजकर वो एक मंच प्रदान करते हैं ताकि उनकी अपनी एक पहचान बने और हम उनके विचारों से, उनके अनुभवों से अवगत हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। साथियों, मैं किसी विषय में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरी नॉलेज बहुत सीमित है। आप जैसे विद्वानों से मुझे बहुत सीखने का मौका मिलता है। फिर भी आज मेरा मन कर रहा है कि अपने मन की कुछ व्यथा आपके सामने रख सकूं। ये कोई टॉपिक नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है। मेरा मानना है कि आज से लगभग 75 या 77 साल पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था, और तब हमने अपनी व्यवस्था चलाने के लिए लोकतांत्रिक तरीका अपनाया था, डेमोक्रेसी अपनाई थी। और इस तरीके को अपनाते अपनाते हमने जो 75 साल की यात्रा पूरी की है, हमने बहुत ही तरक्की की है। कोई फील्ड दुनिया की शायद ऐसी नहीं है जिसमें कि हमने अपनी प्रतिभा के झंडे ना गाड़े हों, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, इंफॉर्मेशन हो
फॉरेन पॉलिसी हो, डिफेंस हो, खेल कूद हो, लाइफ स्टाइल हो, कुछ भी हो, कोई फील्ड ऐसी नहीं बची है जिसमें हमने अपनी प्रतिभा ना दिखाई हो। और नेचुरली हमें अपनी प्रगति पर, अपनी इस तरक्की पर बहुत गर्व है। आज दुनिया के किसी भी देश से हम किसी भी चीज़ से कम नहीं है। इंपोर्ट करना दूर, हम बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और इसके लिए अपने ऊपर जितना गर्व किया जाए उतना कम है। हम अपने उन महान नायकों को नमन करते हैं जिनकी वजह से आज हम इतने उच्च शिखर पर पहुंचे हैं। लेकिन इसका एक पहलू और भी है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रगति करते हुए जहां हमको बहुत ही अपने आप पर गौरव महसूस होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम आकाश की ऊंचाई उड़ते उड़ते हम धरातल से वो नीचे छोड़ गए हैं। हम अपनी जमीन को छोड़ते जा रहे हैं, धरातल को भूलते जा रहे हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सभ्यता, प्राचीन मान्यताएं, उनसे हम धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। और इसका प्रमुख कारण जो मुझे लगता है कि हमारा इंसान का जीवन जो है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो या राष्ट्रीय हो, ये एक सिक्के की तरह से है जिसके दो पहलू हैं। एक पहलू अधिकार कहलाता है और दूसरा पहलू कर्तव्य है। जब तक इन दोनों पहलुओं में संतुलन कायम रहता है तभी हम तरक्की कर सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं, संतुष्ट रहते हैं। और जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तो व्यवस्था डगमगा जाती है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि चारों तरफ अधिकारों की मारामारी तो हो रही है। हर कोई हर जगह अपने अधिकार के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन कर्तव्य भावना को हम कहीं दूर पीछे छोड़ आए हैं। एक उदाहरण आपसे देता हूं मैं कि आपको याद होगा, आजादी की लड़ाई के दौरान लोकमान्य तिलक ने हमको एक नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बहुत सुंदर नारा था और करोड़ों लोगों ने इसको फॉलो भी किया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यदि उस समय लोकमान्य या उनके जैसे किसी मार्गदर्शक नेता ने हमें यह भी कहा होता कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन उसकी रक्षा करना, उसकी मर्यादा को कायम रखना हमारा कर्तव्य भी है। कर्तव्य के मामले में लगभग हर फील्ड पर हम पीछे फिसल जाते हैं। दूसरी बात, हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई है। इसमें सारे 140 करोड़ लोग तो एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए हम अपने कुछ प्रतिनिधियों पर विश्वास करके उनको चुन के एक जगह भेजते हैं जहां वो हमारी समस्याओं को, हमारी योजनाओं को, हमारे लाभों के लिए बातचीत कर सकें, सलाह मशवरा कर सकें, हमारा दिशा निर्देश कर सकें। और वो जगह है लोकतंत्र का सबसे पावन मंदिर, संसद भवन। लेकिन ये हमारे जो प्रतिनिधि हैं, संसद में जाते ही विशेष अधिकार पा लेते हैं। उनको विशेष अधिकार वैसे चाहिए भी, क्योंकि यदि वो जनता के कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनको कुछ विशेष अधिकार चाहिए। लेकिन उन अधिकारों पर अंकुश लगाना ये उनको गवारा नहीं है। वो चाहते हैं कि उनको सब तरह के अधिकार मिले। जो सत्ता में जाते हैं वो सिर्फ इस बात पर केंद्रित हो जाते हैं कि हमारी सत्ता बनी रहे, और जो विपक्ष में होते हैं वो चाहते हैं कि इस तरह से ये सत्ता जो है इनसे हट जाए। सिर्फ ये जनता के कल्याण नहीं बल्कि सत्ता का एक संघर्ष होकर रह गया है। इसके लिए चाहे उनको दल बदल नीति अपनानी पड़े, किसी को खरीद फरोख्त करना पड़े, ये कोई भी तरीका अपनाना पड़े, वो अपनाते हैं। मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। अब आप जरा बताइए कि जिस व्यक्ति को हम अपना प्रतिनिधि मानकर संसद में भेजते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी का या किसी भी दल का या किसी भी रूप में जाता हो, उसको ये अधिकार कैसे प्राप्त हो जाता है कि जनता से प्रॉमिस करके जो जिस रूप में संसद में पहुंचा था वो अपने आप ही बदल ले, और जनता को एक तरह से ऐसे नकार दिया जाए जैसे वोट डालने के बाद, हमारी उंगली पे निशान लगाने के बाद 5 दिन के लिए हमको, 5 साल के लिए हमको भुला दिया जाता है। अब यह अधिकार उन्होंने अपने आप ही ले रखा है कि जब चाहे जिस दल में बदलें, जब चाहे जिस पार्टी में चले जाएं,
जब चाहे जिस पार्टी का गठन कर लें, चाहे जैसे कर लें। होना ये चाहिए था कि जनता में विश्वास करके वो जिस रूप में आए हैं, यदि वो उसको बदलते हैं तो उनकी सदस्यता निरस्त हो और दोबारा जनता का विश्वास प्राप्त करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, जगह जगह हमने रिजर्वेशन में कई ग्रुप, कई जाति वगैरह में बांट दिया गया है। सरदार पटेल ने देश को एकता करने की कोशिश की थी और आज हम अलग अलग जगह जगह उनको किसी न किसी रूप में बांट रहे हैं। जगह जगह रिजर्वेशन की बात करते हैं और रिजर्वेशन उनको काहे में चाहिए? सिर्फ सरकारी नौकरियों में। मुझे लगता है ये लोग जो रिजर्वेशन मांगते हैं, सेना में क्यों नहीं मांगते? ताकि सेना में अनुशासन में रहना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कभी बर्फीले पहाड़, कभी चट्टाने, कभी रेगिस्तान, कहाँ जाके काम करना पड़ेगा, लेकिन उनको सुविधाजनक नौकरी के लिए सत्ता चाहिए, ये तो रिजर्वेशन चाहिए। इसके लिए प्रेरित कौन करता है? और कर्तव्य के लिए हमें हमें कौन हमारा मार्गदर्शन करे? जिससे हम ये आशा करते थे कि हमें कर्तव्य मार्ग का बोध कराएंगे, वो तो स्वयं अपनी सत्ता संघर्ष में, अपने ही स्वार्थ में, अपने ही अधिकार में लिप्त पाए जाते हैं। साथियों, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने अधिकार के चक्कर में वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे हैं। आप देखिए, पहले संयुक्त परिवार होते थे, 10, 15, 20 लोगों का एक परिवार होता था। आज हम धीरे धीरे एकल परिवार पे आ गए हैं। हम 2 या हमारा एक बच्चा, 2 या 3 पे ही रह गए हैं। अब उसमें हमको कितनी असुविधा हो रही है, कितनी परेशानियां हो रही हैं, ये तो भुक्तभोगी जाने। सिर्फ एक थोड़ी सी आज़ादी मिलती है कि अपनी मर्जी से जी सके, और उसके लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संयुक्त परिवार थे तो आपस में ठीक है, आपस में लड़ते थे, लेकिन आपस में प्यार था, एकता थी, संवाद था, आपस में रिश्ते नाते थे और एक दूसरे का सम्मान था। आज आप किसी भी घर में चले जाइए, आज बच्चा, अगर आप जेंट्स हैं तो कहेगा अंकल आए हैं, और अगर आप लेडी हैं तो कह देंगे आंटी आए हैं। उनको पता ही नहीं कि 2 रिश्तों के अलावा समाज में कोई रिश्ता है भी या नहीं। हमने कितना खोया है, कितना अपना नुकसान पड़ा है। अपना सुविधा संपन्न होते हुए भी हम आज बहुत अकेले पड़ गए हैं और परेशानियों से घिर गए। साथियों, अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य के प्रति भी जागरूक होना पड़ेगा, और जब तक हमें अपने कर्तव्य का बोध नहीं होगा, हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। भौतिक सुविधाएं भले ही हम प्राप्त कर लें, लेकिन हम मानसिक और आत्मिक संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यक है कि हमारे अंदर कर्तव्य बोध का हो, और ये कौन करेगा? अगर हम ये आशा करें कि हमारे तथाकथित जो मार्गदर्शक है वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, तो शायद हमारी भूल होगी। मेरा तो ये मानना है कि आखिर हमारा देश है क्या? देश कुछ प्रदेशों का समूह है, प्रदेश कुछ परिवारों, जिलों का समूह है, जिले कुछ परिवारों का समूह है, परिवार कुछ हम लोगों का समूह है, और हम लोग मैं से बनते हैं। यदि हर व्यक्ति अपने मैं को सुधार ले, सिर्फ मैं को, तो मैं सुधरेगा तो हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो परिवार सुधरेगा, और अंततः अपना राष्ट्र सुधरेगा। इसलिए आवश्यकता इसी बात की है कि हम अपने आप को देखें, इधर उधर दूसरों को ना देख करके अपने को सुधारने की कोशिश करें। एक शायर ने बहुत खूब लिखा है, बार बार मेरे दिल में ख्याल आता है कि इस समाज को बदल डालूं, लेकिन कैसे बदलूं, किसको बदलूं, जबकि खुद ही समाज हूं मैं। इसलिए साथियों, स्वयं को बदलो, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। यदि मेरी बातों से किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं बोलने में कोई भी एक्सपर्ट नहीं हूं, कोई मुझे ज्ञान नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भारतभूषण जी, आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात पे बात की। कर्तव्य और अधिकार, ये दोनों में जो संघर्ष चलता रहता है, और जब तक मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा, अंग्रेजी में कहावत है, बी द चेंज व्हाट यू वांट टू ब्रिंग द चेंज।
unless or until I am the change, then nothing can change in the world. So that was a very good statement. Thank you very much, Bharat Bhushan ji. आपने बहुत ही Thank अच्छा you, बोला, sir. बहुत अच्छा विश्लेषण किया आप. हमारे नेक्स्ट स्पीकर है विजय लक्ष्मी Thank you, मैडम. sir. थैंक यू, थैंक यू. विजय लक्ष्मी जी, Yeah, yes. Hello, yeah, प्लीज गो अहेड मैडम. yeah, okay. Thank you very much, Dr. Sengupta, sir, and for this platform. And it's actually, we are fortunate to get this platform to speak whatever we feel, whatever good topic we get. So today I'm talking about, this is about an incident which occurred to Flight Lieutenant Rohitash Singh Alawat. So this is a small article. Rohitash Singh Alawat, a Jat boy from Haryana, got selected for NDA and then went on to become an ace fighter pilot. The Indian Air Force had organized an air show at Yalanka Air Base in Bangalore, and daredevil aerobic stunt flying was the main attraction. Rohitash was part of the aerobic display team, and he was to go solo in his MiG 29. His parents were in town visiting their son at his station of posting. So they were there among the spectators. The old couple's chest swelled with pride as Flight Lieutenant Rohitash Singh Alawat's name was announced. The father proudly said to everyone sitting around, Mara e chora se. Rohitash took off with a thunderous boom, and for the next 10 minutes, he did all the aerobic stunts that he could make his supersonic bird perform the loop. The twist, perform the loop, the twist, the spin, the roll, the Cuban 8, the vertical Charlie, the tail slide, everything. He could do it beautifully. The highly graded and widely acclaimed combat pilot Rohitash Alawat then landed smoothly, parked his bird in its hangar, and joined his wife and parents among the spectators. As Rohitash touched his parents' feet, his mother hugged him and said, "Tu dil chota na kare, chore. Tu thodi aur koshish kar. घनी प्रैक्टिस करा कर, लगातार कोशिश करता रहे, मने विश्वास से एक दिन तने हवाई जहाज सीधा उड़ाना भी आ जाएगा." Moral of the story: ignorance is bliss. Mother's love is unconditional. Indian forces are great. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you for this opportunity to speak. Thank you, Sengupta sir. Thank you very much, madam. This Rohita Singh Alawat story is a very, very famous story. And as I was not very much aware of it. Like when we are speaking, I searched the Google. I was searching the Google, and I saw that the lot of articles are written about him. Actually, so it's a good thing that you brought out such a person to our notice. Thank you very much, madam. Thanks a lot. Thank you. Thank you, sir. May I request the next speaker, G.S. Saluja sir? Hello, good evening, sir. I'm audible. Yes, audible. Good evening to everyone. 20 days ago, we celebrated Diwali. You know why Diwali is celebrated on the darkest night of the year? This time you know the true story behind the Festival of Lights. It all starts with the Ramayana, one of the greatest spiritual epics of the all time. While this story has many layers of meaning at its core, it represents every person's struggle to know themselves. To put it simply, the message of the mind will help you to understand how to live a better life. So, how does it do that? Diwali is a story
of a battle between Lord Ram and Ravan. But this is just a battle that happened thousands of years ago. This battle is happening right now inside each and every one of us. Starts with Lord Ram, who represents our highest self, our divine soul, the infinite life force that lives inside everyone and in all places. Our soul, Ram, lives in Ayodhya, the place of no conflict. It means our soul lives in peace. It is not concerned with the trivial things like how do I look today, what does others think of me, how much money do I have, what's my relationship status, what's my next career move. But in the story, everything changes upon Ram's marriage to Sita, which represents the union between our soul and the human body. As soon as that happens, they are banished from Ayodhya. And in our own life, whenever we focus our thoughts on the body rather than our soul, then we are to lose our peace and we are vanished into the jungle of the world. Even in the jungle, Sita continues to meditate on Ram. But one day, Sita sees a golden deer and gets totally enamored by it, just like our eyes and senses are always distracted by worldly things. And when she stops meditating on Ram and goes after the deer, then she trapped by a demon called Ravan, who represents our ego. And he is depicted as having 10 faces and 20 arms, which means our ego is not so easily to identify, and it often comes in discourses in many different forms. So that battle begins between Ram and Ravan, and eventually Ram is victorious. He manages to defeat Ravan and bring his soulmate Sita back home. The spiritual master Guru Nanak summarizes this real human struggle between our ego and our divine light. He says, Ghat ghat rav raya, ghat ghat rav raya, alak apare Ram. Alak apare Ram means in each and every heart is the unseen and infinite Ram. अलग अपार आप साचा, अलग अपार आप साचा, आप मार मिलाइए. When we kill our egos, only then will we unite with this invisible and infinite truth. So why do we really celebrate Diwali on the darkest night of the year? It's so that we can remind ourselves to break free from our own dark habits, our worldly obsessions, egos, self-importance, insecurities, and all our inner demons. Thank you. थैंक यू सलूका जी. आपने बहुत ही अच्छा फिलोसॉफिकली एंड स्पिरिचुअली आपने रामायण पूरा एपिसोड का जो इंटरप्रिटेशन किया, that was an excellent interpretation, and you also talked about the logic or the rationale. दिवाली क्यों डार्केस्ट ऑफ द मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, और आपने ये जो बोला कि जब आप अपने ईगो को आप डिस्ट्रॉय कर देंगे तब अपनी जो अल्टीमेट रियलिटी जो है, रियलिटी के साथ में मिल पाएंगे. आपने बहुत ही अच्छा फिलोसॉफिकल बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा बात किया आपने.
May I request the next speaker, Sundari Iyer, madam? Yes, I am here. Namaste, MRL friends and Sen Gupta ji. Today I am going to talk about how to stop beggarism. When I went to the hospital on today, some day back, before 1 week back, I saw so many beggars in the signal and transgenders. Then I thought, why we cannot stop this? We have to stop this, no? Otherwise, people are saying, and US and India is a begging country. So many beggars you can see. So it is important to stop. But पहले से बहुत improvement आया है. पहले का जितना नहीं है, फिर भी all the temples बाहर बहुत सारा हरिद्वार and ऋषिकेश बहुत बड़ा beggars we can see. That also we have to stop. How to stop? First of all, we have to stop it by giving alms to them, I think. जैसे हम लोग पैसा देता है, हम लोग को इसलिए हाथ बढ़ाने से पैसा मिलता है और जो काम कुछ करने का जरूरत नहीं है तो पैसा मिलता है. So actually these beggars are very rich. In paper homes, I thought one beggar has got 3-bedroom flats and some crores of rupees in the bank. And so I saw so many beggars here. So I think this is the easy way of earning money for them. So we have to stop giving alms and punishment देने का. Here क्या करेगा? Police people are also helping them by giving afta लेके उसको support करते थे. That you have to stop. First we have to give punishment to the police people and then give punishment to the beggars. So there are so many states in India also where beggarism is not there. In Kerala, I think in Kerala there is no beggar. You can see that is particularly in Ernakulam. I can't see a single beggar. कोई भी से beggar है देखा है तो उन लोग को immediately police लेके जाता है and home में रखता है and they will teach if the child if it is a child they will go put it in the school and give education. If it is an adult they will teach some कुछ काम का सिखाएंगे and they will give salary or earn money in that. They will not. There is a strict. It is a punishable job in Kerala. So many states are, according to me, I think so many states in India is like this. This is the way we have to stop. And when we have to punish the police also, police is supporting really. So we have to teach. First of all, we have to teach police. Don't take hafta, and you have to when you see a beggar, have to hand over to a home or something like that and see how they are improving in their life. एक बार when I saw Sun TV, one lady one lady beggar was interviewed by another comparer, and she asked, who you are begging? तो वो बोलती है बेगिंग इज इजी, तुमको काम कर सकता है ना, इतना अच्छा है, हाथ पाँव दिया है भगवान ने, काम करके कमा सकता है ना. तो शी इज टेलिंग ये तो हाथ बढ़ाने का है, पैसा मिलता है, काम करना तो कितना मुश्किल है. तो इसलिए मैं सोचता है काम करने से अच्छा है. और ये हेरिडिटरी परंपरा जॉब है. मेरा नाना भी करता था, मेरा दादा भी करते थे, मेरा पापा भी करते थे, यही काम करते थे, मैं भी करते हुए, ये परंपरा का जॉब है. ऐसा honestly she is telling, but this is not correct. कुछ भी जॉब करके थोड़ा कम पैसा कमाएगा तो भी it is better, no? बेगिंग करके पैसा कमाना is not at all good I think. And country को भी अच्छा नहीं लगता है. So many people are telling India is a country of beggars, full of beggars are there. They are only talking. They don't know how to stop it. Yeah, we can stop everything. Like शौचालय बनाया, मोदी ने बहुत सारा करोड़ों शौचालय बनाया. तो पहले बोलता था इंडिया तो गंदा है, गंदा है. गंदा का निकालने के लिए कुछ करो ना, तभी अच्छा होएगा. तो ये खाली बोलने से अच्छा नहीं होगा. तो he made so many toilets, so people make the country clean. People can make the country clean, even though our Indians don't have the civic sense.
it is better when I see countries. It is better. I think I am stopping here. Okay. Thank you, Sundar madam. Thank you. आपका जो topic itself is a wonderful topic, that how to it's a real pity actually to travel to any part of the country. I mean, say whether you're sitting in a car or auto or cycle, any center पे अगर आप चढ़ जाएंगे, you will see hundreds of beggars over there. So this is really a not only a problem in India, it's a menace in India. And your very thought that if you want to stop, you can stop it. Probably that's a very important statement that I definitely will think many people to start think about. Not that the people are not thinking, but probably people are not doing enough to stop this bad practice and menace of the begging as a life. And the begging as a profession actually. आपने जो बताया, begging has become a profession, not only a profession but a hereditary profession. So probably that will stop one day, will come. Thank you very much, Sundari madam. Thanks a lot. May I ask the next speaker, Naveen Duggal ji? Namaskar. Can you hear my voice? Yeah, Hello? we can hear. We can hear. Okay. Please go ahead. With due respect to each and everyone, I hope you are all happy with the views and talks of different people, different ages, different country, different languages. It's called different folks and different strokes. We live in a world of a very high caliber cultural, environmental, and other educational, careeristic, scientific, spiritual wise, wealth wise, etc., etc. We are quite ahead of it. There is a problem not with the Indians, it is all over the world. It is not due to just the people who speak. Forgive me, my previous speaker, but it is the Panam principle, that is the parents. What was rightly said in the past, what was said that there was joint family system and we had this hierarchy of a thing, and they were there to help each other. And now it has been a monotonous single uni parents concept, and then we are bringing the maids and the workers to look after the children, whatever as we can afford. The most important problem in the world is the environment. It is the wars that have taken place, the side effects of World War I, II, III, now the present wars, and the fear of survival. How are we going to survive? So that's where some other people take advantage of what we call bhrashtachar and all these things. Another point is the nation. There is no nation having different concept, or that they say, we are friendly with you, but actually they are all selfish, or they want to develop their own country, their weaponry, their education system, jobs, etc. And many other good factors. But India is a lucky country with a lot of spiritual background, lot of rich cultural and heritage, that I feel that each one of us can at least take the responsibility of one act of kindness that will help to improve not only me, myself, my environment where I stay, my country, and then give a good example, setting example of goodness. And then is the association. We meet the good people, the bad people, the ugly people, the corrupt people, the whatever, I don't want to say the leaders, but big people. But in the past, before we got the independence, who was the person who brought independence, or who took the one who got a kick in South Africa in Durban? It was Mahatma Gandhi. He realized that my country needs me. I have to help my country. I must come up. So he came back to India, and then he started his movement. And that was a positive movement. I'll not call labeling the brands or the parties, but the intention was good. Similarly, there was, of course, Gokhale sir and many other, like the one Ambedkar ji, the one so many leaders, including Nehru and Shastri and everyone. But what has happened is our nation has gone back because of the development. There are crises made by others. We can't help it because we were empowered by the West. So what we have done is we started learning English and all. Instead of remembering our own culture, we forgot this culture and adopted the other language. Of course, Indians are one of the best Indian speakers, writers, teachers,
in every field. I would say in NASA, if you go to America, they salute us. Now, what is the reason of their salutation is because there is growth and opportunity in those West countries or the Eastern Australia, New Zealand, blah, blah. But the side effects are also there. See, when our children grow there, it's a different scenario. Means their wellness is taken care. You have fit for health. You have a health services, वगैरह. I was also in the part of the Gulf, and I realized what made me think, how can I help you? This factor helped me because when I was the only one Indian with lot of different nationalities of Indian language, states, वगैरह, I had to help them because in the hospital or in the airport, many people were not so literate. So not to bring literacy, but the awareness of the literacy, the awareness of safety, the awareness of cleanliness and fitness. So this made me realize just talking, oh, I'm well, and let the other person go to hell. That's not my policy. I was trained because I was observing the local people of that country was so strongly bonded with their religion, with their culture, with their practices. But at the same time, they didn't ask me to convert. They didn't ask me to do. But I said, oh my God, I come from India and I don't know about my own culture. I don't know about other people around me. So I started going to these social events and whatever people or religious prayers and or meditation, Indian setups, Christian, Muslims, everywhere. What I realized at the end of, we are one. We say we are Indians, but we are one. But who has made us divide and rule? It is the British. And that same egma is still going on. So then we have other problem was skill-based knowledge versus the basic educational careeristic knowledge. So far, till few years back, we were trained as there was no such highlights of it. Lately, maybe the last 10, 15 years, they brought the skill-based knowledge, in the limelight. But to be honest, every Indian is also a farmer, a good housekeeper, a good defense. Means he should have that knowledge how to overcome. He should have some skills, and they do have. We do have a lot of hobbies, but we did not pursue it. What was the reason of this? Because for our two times roti kapda makan, each of our parents have sacrificed their life day and night for the good benefit of educating our children so that they could stand a better life than them. But some of them send their children abroad. Now, once they go abroad, they have a nice environment, they're happy, they're getting all the perks, they forget parents. So the Gurukulam factor was missing. There are teachers, there are principals, all that they show, but the Gurukulam habit, the seva. So coming to the point is the money. No money, no honey. And energy, money is the energy and fuel for our freedom of habits and living style, lifestyle. So what type of lifestyle you want? What community you would like to go? So influence of the association, the problem with the media of insulting our own Indians and not having that loyalty and that respect that we should care for the poor, no matter what they are, and we should be able to identify the risk factor. Am I not being fooled? I hope I am not over smart, but at least let go and let the daily self-improvement plan for old age continue. And then second is the wellness, where we are doing the yoga and prayers and all, which is very good. And meditation is a part which will keep our system working, other than medicines only. Third is the family. There is a lack of communication with the old or the elderly people and the youngsters. No interaction because everybody is busy. It's just an excuse. So what the elderly people do, they read some books, some good words, or they recall their old memories. What is the advantage? Because they are at least having those basic factors or what they were taught in the curriculum or by the parents, by the society they lived in, the happy one, the small society, rural or anywhere. And then comes as our adventure. Because of these media people who have nonsense information, we are not ready to take any chance or risk taking. We want to live only in the comfort zone. How do you overcome? Unless you don't make some baby steps, at least to walk from here to the garden or here to the station and come back. And if you feel you're not comfortable, walk in your compound. But there is no friendship. It is just monotonous, like we are robots. Let's not be like that. Let's praise and appreciate everyone. Try to learn some new skills which
I'm sure MRL Foundation, society, our group, under the leadership of our Dr. A.K. Gupta, Chamta ma'am, each of you are jewels. You have contributed a lot. So don't have the fear. Just come up, speak out, and so many opportunities are there to overcome that. Last but not the least is the service. Life is short. So, like me, I am a helpful person, I say, but I don't have financial, much earnings, or I don't have, at least I have a smile to share with you. Why not we smile and be happy? So the joy to serve with love and gratitude is the way to success. So let there be the abundance of energy, love in the hearts, other than doubting others that what will I get? What will be the effect? No, just do it. Do your daily prayers. The joy of living the present moment with acceptance and with gratitude of Shukrana, that is thankfulness and grateful bhav in our daily prayers, so that we get re-energized. Even though we are rejected, we are senior citizens and not required, but we still have to fight this and do bring a smile on everyone's face. Let us bring that oneness of all and continue with the gratitude and bliss to all. Namaskar. थैंक यू नवीन जी, आपने एज यूजुअल बहुत कुछ बात आपने बोल दिया, वैरायटी ऑफ पॉइंट्स. बीना मैडम इज ऑलरेडी राइटिंग वैरायटी ऑफ पॉइंट्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एसेंशियली दैट live at the present moment. I think that's the most important thing. Build the country, do service, be happy, make others happy, enjoy the life, and let also others enjoy the life. I think that's what you talked about. Thank you very much for that. Karmane May I vadita call upon the mahapuleeshwar. Thank you. थैंक यू. अभी हम ऑलमोस्ट फिनाले पर पहुंच रहे हैं, 2 स्पीकर बाकी हैं. मैं आई रिक्वेस्ट उषा दीदी मैडम टू प्लीज कम फॉरवर्ड. Thank you, sir. उषा दीदी. Thank you so much. First of all, I'm so thankful to to MRL and especially Mr. Sen Gupta ji for this opportunity to express my thoughts. I will start with the line from a famous song which is iconic. आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है. जो भी है बस यही एक पल है. It's about this moment. Our present means now. How we can use and improve our present? I have some suggestions. You already know what is present and where to find it. You know how it can make you happy. It's not past or future. It is now, this moment. Even in most difficult situations, when you focus on present moment, it gives you needed courage and confidence. Being in present means turning out distractions and paying attention to what is important now, at this moment. When you let go of past, you improve your present. When you feel sad, it's time to learn from the past or plan for the future. Create a plan to make your future better and put it in action in the present. When you want to be happy, it's time to be in the present moment. If you want your present and future better, learn from the past. When you live with a purpose now, you are more able to lead and support. The present is the best gift you can receive. Why? Because having peace of mind and feeling more alive, being more productive, finding whatever is important to you and your loved ones. Most of the people could have been happier had they been given the gift of the present. There are 3 ways you can use your present moment. One is focus on what is right now. Learn from the past. Do things differently. Plan for future if you want to make it better. And remember, yesterday is a mere shadow. It's just a shadow. It's no more there. Tomorrow is a vision. It's only an imagination. We don't know what happens there.
The truth resides in right now. There's nothing more forceful or powerful than the present moment. Don't carry any burden from the past. Forgive everyone, even people who have hurt you. The past is over. Don't worry about future. जो गुजर गया, सो गुजर गया. We need ways to help our people work better and enjoy their lives. So I am giving the present to everyone in our MRL team. Please accept it. This song explains it very well. जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते. सुबह आती है, रात जाती है, वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं. आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है. एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते. Please value the present moment right now. Thank you so much. Thank you, Shadidi Madam. I think you spoke a very, very valid point. Live in the present, and present is the biggest gift. You can learn from the past, but past is a shadow, and future is imaginary. Yes. So when you are staying now, think of now. Make it as pleasurable as possible. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Now we come to the last speaker of the day, Mr. Vishwas Devalji. Devalji, Yeah. sir. Yeah. Thank you. May I audible? Audible, sir. Very much. Thank you. Thank you. First this is my second chance for सबकी सुनो. मैं सर्वप्रथम डॉक्टर सेन गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म चुना है सबको बोलने के लिए और सबको अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए. उससे हम बहुत सी चीजें सीखते भी हैं. आज का मेरा टॉपिक पिछले वाले टॉपिक से ही थोड़ा सा आगे का है. पिछले वाले टॉपिक में हमने पहाड़ों पर जाकर के ट्रैकिंग की थी. इस बार मैं आपको ट्रैकिंग के और अलग अलग जगह, प्रकृति की जगह बताना चाहता हूँ जिसमें आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप जा सकते हैं या आप उसको एंजॉय कर सकते हैं. लाइफ में एंजॉयमेंट ही है और वो आप एंजॉयमेंट ग्रुप में ही कर सकते हैं, जैसा कि आप अभी देख भी रहे हैं. तो मैं पहले हिमालय की ट्रैकिंग के बारे में कहा था. अब मैं आपको प्रकृति के एक अलग अलग ट्रैकिंग के बारे में आपको बताता हूँ कि प्रकृति क्या क्या अपने को दिखाती है और हम प्रकृति के पास जाके क्या क्या देख सकते हैं. इस संबंध में मैं आपको मेरे जैसलमेर ट्रैकिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसलमेर ट्रैकिंग में पूरा सैंड ट्रैकिंग है और आप सैंड को वो कैसे चमकती है, वो कैसे दिखती है, उससे कैसे आप अनुभव करते हैं, वहाँ के लोगों की कठिनाइयों को और उनको कैसे अनुभव कर सकते हैं, वो हमने देखा. सैंड ट्रैकिंग का ये जो फेस्टिवल वहाँ होता है जनवरी एंड और फरवरी बिगिनिंग में, वो थार फेस्टिवल के नाम से है. थार डेजर्ट फेस्टिवल कहा जाता है. वो हमारा थार फेस्टिवल के साथ ही हमारा ट्रैकिंग एक्सपीडिशन भी उन्होंने YHI ने ज्वाइन किया था. तो हमने पहले 2 दिन थार फेस्टिवल में ज्वाइन किया. वहाँ पर वो ऊँट पे कितने तरह के करतब दिखाते हैं वो हमने देखा. वहाँ की तरह तरह की हवेलियों को देखा, वहाँ के किलों को देखा. वाकई डेजर्ट में इतना बड़ा करना बहुत ही छोटी चीज़ नहीं है. फिर हमने ऊँटों पर दूसरे दिन सफारी की. मतलब आप ये कहते हैं कि ऊँटों पे सवारी करना वाकई बहुत मुश्किल है. हमने पहली बार ही हम बैठे ऊँट पे, तो ऊँट पे बैठना और ऊँट जो चलता है वो एक बहुत ही अनुभव उसका बहुत अच्छा रहा. और ये भी कहा जाता है कि जैसे ऊँट किस करवड़ बैठेगा, ये जो कहावत है, वो कहते हैं कि जैसे घोड़े पे तो आदमी सीधा उतर जाता है, लेकिन ऊँट से आप सीधा नहीं उतर सकते. जब तक ऊँट बैठेगा नहीं आप तब तक उतर नहीं सकते. तो ऊँट किस करवट बैठेगा उसके बाद ही आप उतर सकते हैं. उससे ये कहावत है, क्योंकि ऊँट किसी भी करवट, लेफ्ट राइट, मतलब उसको जब जो पसंद आता है उस करवट ही बैठता है. एनीवे, हम लोग इसे बैठ करके आगे गए. बहुत ही अच्छा अनुभव रहा. ऊँट पे चलना एक अलग तरह का अनुभव है. उसका जो चलने की जो गति है, उसकी जो उसकी चाल है, वो वाकई बहुत ही अद्भुत है. और हम लोगों ने वो करीब करीब वो जो किया हमारा ऊँट पे चलने का,
वो सफारी कहें आप उसको, तो वो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हम शाम को जा करके वहीं उस जो जहाँ खत्म हुआ था उसके आगे हम सैंड ड्यून्स में गए और वहां जाकर हमने सनसेट भी देखा। सनसेट भी इतना बढ़िया दिखता है कि आप इमेजिन कर सकते हैं। वो तो हर कोई जा करके, जैसलमेर भी जा सकता है, इट इज इजी टू, इस स्टेज में भी आप, इस एज में भी वहां जाके कर सकते हैं। तो हमारा सैंड ट्रैकिंग वाकई बहुत अच्छा रहा और हमने वो तरह तरह के वहाँ अनुभव किए। इसके अलावा भी हमने ट्रैकिंग की है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग जैसे चांदनी रात में नौका विहार करते हैं। जबलपुर एक भेड़ा घाट के पास वहाँ मार्बल रॉक्स हैं, बहुत ही सुंदर है। आप वहाँ फेमस है चांदनी रात में नौका नौका विहार, मतलब आप फुल मून में आप वहाँ यदि नदी में, नर्मदा नदी है बहुत बड़ी, उसमें आप जाते हैं तो आप जो मार्बल स्टोन्स हैं, मार्बल रॉक्स हैं, उसके जो चमक आती है रात को, वो आप देख सकते हैं। मैं तब भोपाल में था, तो हम लोग भोपाल से जबलपुर गए। हम रात को करीब 10 बजे पहुंचे और 10 बजे हमने भेड़ा घाट से लेके धुआंधार, वो करीब 7-8 किलोमीटर है, वो फुल मून में हमने ट्रैकिंग की। वहाँ नुकीले पत्थरों पर उन उन मार्बल रॉक्स को देखते हुए, वो वाकई बहुत ट्रैकिंग अद्भुत थी। और सुबह हमने वापस हम भोपाल से, वह जबलपुर से वापस भोपाल आ गए। तो ये ट्रैकिंग भी बहुत ही सुंदर है। मार्बल रॉक्स भी देखने के लिए आप जा सकते हैं। वो तो इस एज में भी हम कर सकते हैं। वो वहाँ पर नदी में आप नाव से भी जाते हैं, वहाँ वो प्रैक्टिस वो लोग दिखाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत ट्रैकिंग होती है, वीकली भी होती है, जिसको हम लोकल ट्रैकिंग कहते हैं। लोकल ट्रैकिंग भी वाईएचआई हर जगह, हर सिटी में अरेंज करता है। उसमें आप सिटी के आसपास के 50-60 किलोमीटर के आसपास के, उसमें बाय बस या वो जैसे अरेंज करते हैं, जाते हैं, वहाँ रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं और वहाँ एंजॉय करते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा अनुभव रहता है। और आपको नाइट ट्रैकिंग भी हम लोगों ने की है ना। रात को आप चलते हैं, जैसे ही हमने मार्बल रॉक्स देखी, वैसे ही हमने भोपाल में फुल नाइट एक हिल पे जा करके भोपाल का देखा। वहाँ की शांति अनुभव की, रात को जो पीस रहता है उसको वो कैसे हम अनुभव कर सकते हैं, वो भी हमने बहुत अनुभव अच्छा किया। तो आप ट्रैकिंग से बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है। हम नर्मदा संगम में भी गए, वहाँ बांद्रा बांध करके जगह है, आपको भोपाल से नर्मदा और इसका नर्मदा तवा संगम है, वहाँ भी आप जा करके देख सकते हैं। वो बहुत ही पीसफुल और बहुत अच्छा लगता है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना इस टॉपिक का एंड यही करूँगा कि आप भी जाएं, देखें, अनुभव करें। प्रकृति वाकई हमको बहुत अच्छे अच्छे रूप दिखाती है, हम देखने की कोशिश करें। यहाँ पर मेरे को एक ही किशोर कुमार का गीत याद आता है, जो इसमें का थोड़ा बहुत सेट होता है, वो मैं गा के आपको एक अपना टॉपिक का अंत करना चाहूँ। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, इस ऐसे गगन के तले। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद का आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया देवल जी, आप तो हमको दूसरी दुनिया में लेके चले गए, एकदम ट्रेकिंग की दुनिया में लेके चले गए। लगते हैं ट्रेकर हैं आप, एडवेंचरिस्ट हैं। आपका अनुभव बहुत अच्छा लगा सुनने में। और आपका और दूसरे जो ट्रेकिंग एक्सपीरियंस है उसके लिए शायद आपको पूरा सेशन लेना पड़ेगा, 1 घंटे का, 45 मिनट 1 घंटे का। तो थैंक्स वेरी मच फ्रेंड्स, वी हैड एन excellent सबकी सुनो program today. Variety of views, variety of ideas, varieties of thoughts, varieties of life stories. We heard a lot of things today. So thanks a lot to all speakers. Thanks a lot to the entire audience. And thanks a lot for the MRL channel and the platform. Thank you very much for being over here. Look forward to seeing you on the Saturday musical program. Thank you very much. Thanks to all. Yes, thank you. Very nice evening. Yes. Yes. We heard so many things today. Yeah. Variety of things, yes. Variety of lives. Thank you. Thanks to all. Okay.